Hello, students. This is Kainat from the channel Alamkul, and today we are going to solve some of the numericals based on the chapter motion of class 9. Okay, so here we go. This is the first. These are the four questions that I have come up with. The first question reads: A motorboat start from rest on a lake, accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. Okay, how far does the boat travel this time? Okay, so taking first question here. Let's take first question here. A motorboat starts from rest. Okay, so if a body is starting from rest, what we have to take? We have to just put u is equal to 0, initial velocity equal to 0. We have to put initial velocity equal to 0 when something is given, when it is given that the body is starting from rest. Okay, it means that its initial position, initial velocity is what? 0 meter per second. Fine. So without thinking anything, just put u is equal to 0. Now what it's given, always write the given first. Given first. First write the given thing that you have, that you are given. Okay. So on a lake, it accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. So rate is given as 3 meter per second square. Meter per second square is what? The unit of acceleration. So write it. Acceleration 3 meter per second square for 8 seconds. This is missing, so you can write it for 8 seconds. Okay, so time is given as 8 seconds. How far does the boat travel this time? So we have to figure out the value of s, means the distance. We have to figure out the speed, the value of distance. Okay, so we are given these three values. We are knowing three equations of motion. What are these? V is equal to u plus at. The second is s is equal to ut plus half at square. And the third one is v square minus u square is equal to 2as. Okay, we'll just use the among the these formula. ठीक है, इसी फॉर्मूलाज में से हमें यूज करना है. तो हम सबसे पहले यूज करेंगे v is equal to u plus at. Also we can directly use this formula to find s. Okay, also we can find first, even with these two, if we are going to find v first, then we will use this formula, and then using v and u values we can write v, u and a values, we can find the value of s from this, but it will be lengthy. So better if we are knowing we with the values of u, a and t, then we can use this formula directly. Okay, so applying this formula, s is equal to ut plus half at square. Just write it here that using second equation of motion, okay, s is equal to ut plus half at square. So u is what? 0. So 0 into 8, this will be 0. Okay, this will be 0. This term will be 0. 0 plus 8 plus half, 0 into 8 plus half, at square. A is what? 3, and t is given as 8 into 8 means t square. Okay, so this term will be 0. Now we can cancel this 8 from 2 in 4 times. And what we will be left with? 3 4s are 12. 3 into 4 into 8. This term is 0, so we need not to mention this. 3 4s are 12, and 12 into 8, how much? I think it's 96. So it's 96 meter. Okay, and always also keep in mind that all the units must be the SI unit. Fine, all the units must be the SI unit. It's not like कि ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. तो ऐसा कुछ है नहीं. Everything is in every units are in SI units. So we'll just put the formula, we'll just put the values in the formula directly. So 96 मीटर ये कवर करेगा इस टाइम. 8 सेकेंड में 8 सेकेंड तक चला है, तो 96 मीटर कवर करेगा
with the acceleration 3 meter per second square. Okay, अगर इसमें velocity भी पूछा होता, that final what would be its final velocity, so we would have applied this formula as well. Okay, to find the value to find the final velocity of the motorboat. Okay, first question is solved. So we have got 96 meter. Now the second question. Second question is what? A trolley, while going down an inclined plane, has an acceleration of 2 centimeter per second square. See here, it's 2 centimeter. It's centimeter. Okay, centimeter per second square. Now, what will be its velocity 3 seconds after the start? See, the question is given after the start. After the start means the body has just started. Means is its initial velocity will be taken as 0. Initial velocity will be taken as 0. Okay, because after the start, time is given as 3 seconds and the acceleration is given as 2 centimeter per second square. Okay, 2 centimeter per second square. Let it be 2 centimeter per second square, because whatever we will be will be getting will be in centimeter per second or centimeter. Fine. Okay. The main thing here is that seconds and seconds are same. Okay, so let it be 2 centimeter per second square. Otherwise, it would have been 0.02 meter per second. You per second square. Okay, you can also write this, but let it be this only. Okay, now we have got 3 values. We have to find the final velocity. Means we have to find it for v. We have to solve it for v. Okay, तो v के लिए हमें सॉल्व करना है, तो हमें पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन, बिकॉज u is given, a is given, t is given and a is given. Okay, so all 3 values are given. v is equal to u plus at. What does it mean? v is equal to u plus at. u is given, a is given, t is given. All values are given. Only we have to find the value of v. So for using first equation of motion, okay, first equation of motion, v is equal to u plus at. Okay, v is equal to u is what? How much? 0. Okay, and a is 2 and 3 is time. 3 2s are 6. So final velocity will be how much? Centimeter per second. Don't ever write it meter per second, because we have taken this value, means the value with the unit centimeter per second square. So you always write here, you will write here centimeter per second, whatever be the unit of the terms. Okay, the given terms. ठीक है, तो we have got this. अगर डिस्टेंस भी पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस भी पूछता तो हम लोग s is equal to ut plus half at square लगा देते हैं, और we could also have applied this formula, v square minus u square is equal to 2s. Okay, you would have been 0. v की वैल्यू आई गई है 6 6 36. 2a is what? 2, and we have to figure out for s. हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर ऐसा सवाल होता तो ठीक है, 36 by 2 into 2. So 2 into 2 is equal, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 36. So in how many times? In 18 times, and this will cancel in 9 times. So s will be 9 centimeter. Don't write it meter, centimeter. Why? Because it's in centimeter. Fine. Okay. Now the third question reads, the brake apply की बात आ गई भाई, यहाँ पर brake apply की बात आ गई, ब्रेक अप्लाई की बात आ गई. तो चलो, ब्रेक अगर अप्लाई हुआ है, तुम लोग तो बहुत ही तेज बच्चे हो, ब्रिलियंट बच्चे हो. ब्रेक अप्लाई हुआ है तो क्या हो जाता है? ब्रेक अप्लाई हुआ है तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और बाद में जाके स्टॉप हो जाएगी. इसका मतलब इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहेगी, क्योंकि ये बॉडी चल रही है. हम ब्रेक लगाए, धीरे हो गई. ये बॉडी क्या कर रही है? तेज से चल रही है. फिर हम क्या किए? जैसे हम डिसेलरेशन लगाएं, मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाएं, वो क्या हो जाएगी? मींस ब्रेक लगाएं तो क्या हो जाएगी? धीरे जाएगी, रुक जाएगी. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ओके, तो देखो, brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second in opposite direction. Opposite direction means a will be taken as minus 6 meter per second square. It will be in negative. Okay, brake apply हुआ है तो negative acceleration लगना शुरू हो जाएगा. To the motion, if the car
takes 2 सेकेंड टू स्टॉप. यहाँ पर तो दो बात दे दिया, 2 सेकेंड टाइम दे दिया 2 सेकेंड, और स्टॉप हो गई इसका मतलब v इक्वल टू 0 दे दिया. वहां पर स्टार्ट हो रही थी तो क्या हो जा रहा था, u इक्वल टू 0, और यहाँ पर स्टॉप हो रही है तो v इक्वल टू 0. ओके, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक. कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स दिस टाइम. वी हैव टू calculate the distance. Same question is given again and again. Very easy question. Very easy question. So we have to do what? We have to now here see. Anyhow, we have to figure out for you also. Why? Because in both of the equation, in second and third, we need u to figure out the value of s, because s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. And also, if we apply this formula, v square minus u square is equal to 2s, then also u is needed. And here also u is needed. We means anyhow, we have to find the value of u to get the value of s. Okay, so we have to apply the first equation of motion. So what is the first equation of motion? Using first equation of motion. ठीक है, तो v is equal to u plus at. V is 0 and u is what? I don't know. We don't know. Plus at. See, a will be in negative. Minus 6 into 2. Minus 6 into 2. Okay, u minus 12. So we'll take 12 here. So u will be equal to 12 meter per second. Now we have got the value for u as 12 meter per second. ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड हुआ. अब क्या हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, धीरे धीरे होते होते ब्रेक अप्लाई हुआ, धीरे धीरे होते होते क्या हो गई, 0 हो गई. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. जो इजी हो वो करना. हमेशा कैलकुलेशन के टाइम क्या करना रहता है, जो इजी तुम्हें लगे, ये इजी लग रहा है कि ये इजी लग रहा है. हमें तो लग रहा है कि ये इजी लग रहा है. क्यों? क्योंकि इसमें v वाला पार्ट 0 हो जाएगा. बिकॉज v 0, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म रह जाएंगे सॉल्व करने के लिए, है ना. 2 टर्म रह जाएंगे सॉल्व करने. इसमें भी 2 ही टर्म है, बट स्टिल वी विल बी this we'll be using this formula so that our calculation will be more easier. Okay, so v square minus u square, we can apply any of the formula. Okay, s is equal to what? S is equal to u, no, this formula ना, v square minus u square is equal to 2s. चलो दोनों फॉर्मूला से करेंगे हम, देखते हैं सेम आता है या नहीं. ठीक है, सेम आता है या नहीं. तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ताकि तुम लोग को शिकायत ना रहे कि ये वाले से ही क्यों की, वो वाले से क्यों नहीं. ठीक है, दोनों से करेंगे. v विल बी 0, u स्क्वायर, u आ गई है वैल्यू, तो माइनस देखो माइनस का स्क्वायर नहीं होना है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 12 का स्क्वायर हो रहा है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद माइनस u का स्क्वायर एंड माइनस u स्क्वायर. सो इसका मतलब हुआ कि हमें माइनस का भी स्क्वायर करना, सो इट विल बिकम पॉजिटिव. बट हियर u का सिर्फ स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर नहीं करना है. ठीक है, तो ठीक है, तुम लोग तो वैसे भी तेज ही हो. u 144 हो गया, 144, 12 का स्क्वायर 144. तुम नहीं भी कर सकते थे मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आकर के कट जाएगा तो वो इजी रहेगा. as, so a is given as नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया होगा, -6 एंड दिस इज योर s. ठीक है, -144. देखो ट्राई किया करो ना कि मल्टीप्लाई वाली चीजें ना करो. ठीक है, 12 into 12 रहने दो, लेट इट बी एज इट इज. बाद में किया करो ये सब का. अब इसको हमको नीचे लाना है, तो ये 2 into -6 आ जाएगा इक्वल टू s. This minus will get cancel this minus, and this will become what? 6 2s are 12. So 112 will get cancelled by 112. ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में तो आ ही रहा होगा. 12 मीटर. ठीक है, हमारा क्या आ गया, 12 मीटर डिस्टेंस आ गया. अब चलो इससे करते हैं. s is equal to ut plus half at square. U is 12 and t is what? I think it's 2 or something. 2. Yes, 2. So it's 2 plus half. A acceleration was -6, so -6, and t was 2. 2 into 2, 4. ठीक है, 12 2 का कितना होता है, 24 होता है. प्लस इसको इससे कैंसिल कर दो 2 से, so 2 6 12 होता है, and this will be -12. So 24 minus 12, it will be 12. Isn't it the same answer that we have got of s?
Isn't it the same? सेम आया ना, बोल रहे थे ना कि सेम ही आएगा, either of the formula यूज कर सकते हो, तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, जो जो आसान लग रहा है वो वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। Now the fourth question, we will go for fourth question. Okay. A ball is gently dropped from a height. यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब ड्रॉप करने का मतलब u इक्वल टू 0 है, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, इसका मतलब u इज समथिंग एंड v इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉप किया जा रहा है मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो बॉडी है, बॉल है, वो क्या है, जीरो जीरो वेलोसिटी पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। ड्रॉप कर रहे हैं उसको, ठीक है, रेस्ट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो उसकी वेलोसिटी कुछ अटेन करेगी और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो सो डिस्टेंस इज गिवन 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ओके, एट द रेट ऑफ, सो इट्स गिवन ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 की जगह हमें 10 लेना है, अगर दिया है क्वेश्चन में तो हमें 10 लेना है, अगर नहीं दिया है तो हमें 9.8 लेना है। With what velocity will it strike the ground? So we will have to find v. After what time will it strike the ground? We also have to figure out the value of t. So we are given these two values, and also we are given u equal to 0. Three values are given. Okay. Now three values are given, u, a and s. v and t हमें निकालना है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पहले हम लोग लगा देते हैं, है कि नहीं है कि नहीं, बोलो। S is equal to using second equation of motion. Second equation of motion, S is equal to ut plus half a t square. तो S हमको पता है 20 है, U हमको पता है 0 है, so it will be 0, and half a हमको पता है t है, और t हमको नहीं पता, स्क्वायर रख दो, जो नहीं पता नहीं पता, क्या करें नहीं पता तो, ठीक है। ये इससे कटा 5 बार में, ये नीचे गया तो 20/5, so it will be t square, it's already t square, not will be, so it will get divided by 4, so t square is 4, so t will be what, plus minus 2, isn't it? It means that we'll be getting root 4, so it will be plus minus 2, so write it, time तो negative में हो नहीं सकता, so it will be 2 seconds, ठीक है। neglecting negative sign, neglecting negative value, ओके, बिकॉज टाइम जो होगा वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, सो we'll take positive 2 seconds, so we have got the value for time, okay। टाइम तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, राइट, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो कोई भी दो फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि हमें टी भी पता चल चुका है, so v square, v is equal to u plus at कर लेते हैं, ठीक है, v is equal to u plus at, so u is 0, a is what, a is 10, and t we have got 2, so v has come out to be 20 meter per second, so we have got the final velocity 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया सब कुछ, सारे क्वेश्चन समझ में आए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके लिए, मोशन चैप्टर का, जो कि एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस related to motion, and I'll come up with more videos in the next lecture. Okay, till then, bye bye, take care, and don't forget to like, share and subscribe to this channel. Bye.